हे गाइस, सो मैं एक दिन फिल्म करना चाहती थी मेकअप लुक, बट तो मैंने अपना स्किन केयर करके ना हाफ एन आवर छोड़ दिया था बिकॉज आई गॉट अ लिटिल बिजी. आई नो आई सेड आई डोंट हैव टाइम, बट आई गॉट बिजी बिकॉज गेस्ट आ गए थे. अभी मैं करूँगी अपना मेकअप एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई एम यूजिंग दिस NY बेस प्रो स्ट्रोब क्रीम इन द शेड रोज डायमंड. गुड इनफ प्राइमर मैंने लगा लिया है. Foundation, I am using Mama Earth's Glow Serum Foundation in the shade 03 Nude Glow. I am going to be using the Swiss Beauty brush. So if you haven't checked that video of mine, go ahead and check it out. तो मैं ब्रश के हेल्प से एवरीवेयर इसको प्लेस कर रही हूँ. So taken about one pump. मैं नेक्स्ट आईब्रोज़ कर रही हूँ बिकॉज़ मेरी जो टेक्निक है, एक्चुअली मैं फ़र्स्ट आईब्रोज़ करती हूँ, उसके बाद फाउंडेशन करती हूँ, बट मैं भूल गई एज़ यूजुअल. तो मैं कर रही हूँ बिकॉज दे सिट इन प्लेस एंड सिट लॉन्गर. फिर जब सारा फाउंडेशन हो जाता है, मतलब सारा बेस मेकअप हो जाता है, तो थोड़ा सा हल्का सा फिर से सेट कर देती हूँ. तो दे दैट वे आई एम नोटिसिंग कि दे सिट इन अ लॉट लॉन्गर. बिकॉज अब बहुत गर्मी है तो मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी. दिस इज़ पैक्स माइक्रो फिनिश मेकअप मिक्सर, जस्ट सो दैट मेरे फेस पे अच्छे से टिका रहे एंड डजंट मूव एट ऑल. It's a very beautiful makeup fixer. Stays put on your face for a good long time. Now I'm going to be using Swiss Beauty's liquid concealer in the shade 02. I think it's San Moyen or something. I'm not sure. तो मैं इसको लगा लूँगी. Using the brush. This is from Real Techniques. Next thing, I am going to go with blush. Blush, I am using Rare Beauty's liquid blush in the shade Joy. This is my favorite blush this summer because it's a perfect summery color. So I am going to be doing that. It's super pigmented. You need to be really careful with how much you go in with this one. But I like a lot of blush क्योंकि मैं ऊपर से powder थोड़ा कर देती हूँ ना, तो that's why it looks good. अगर आप बिगिनर्स हो एंड यूर यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्लश, मेक श्योर कि आप एक तरफ पहले लगाओ, उसको ब्लेंड कर लो, फिर उसके बाद दूसरी तरफ लगाओ. बिकॉज मुझे आदत है, मुझे पता है कि कैसे ये परफॉर्म करता है और आई नो हाउ टू डू इट. मैं दोनों तरफ लगा लेती हूँ, पर आप केयरफुल रहना, बस दैट्स इट. लुक डैम गुड, right? The next one I am going to be doing is, I don't have any more cream products. I don't do contour on a day-to-day basis. मैं सेम ब्रश से ही अपने अंडर आइज को भी I'm using the same powder brush and using it to set my concealer. By the way, this is from Sugar and it is 10 latte. This has UVA UVB protection, so I really like it. This summer's any additional SPF is always appreciated, even if it is just 15, 20, 30, doesn't matter. Just anything, because already sunscreen तो मैंने लगा रखा है. Anything else on top of that is really appreciated. जाता है, या फिर हल्के हाथ से ना आप जैसे कोई भी कॉम्पैक्ट हो गया लेकर यू कैन सेट इट एज अ वेल एंड वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा एंड यू वॉन्ट फील द पिंच.
Next, what I'm going to be doing is I'll be using Sugar Contour de Force Mini Bronzer in the shade Woody Wonder. My go-to kind of makeup look, especially when I have to go to my in-laws' place and they all are very reserved about not applying too much makeup or whatever. That this is my go-to look. It looks very simple yet put together and not too much as well. That's it. And I just go in all over my eyelid, just bringing back some flush on the eye. And for mascara I am using Elia's mascara. This is an international brand again, but it's a very good mascara. I don't like to apply falsies, as you guys already know. This is without and this is with, so you can see it gives me good coverage. For the lipstick, I am going in with 21 Nude Nuance, and the shade I really like because it's not too light. I feel it's the perfect brownie shade for our Indian ethnic outfit. It is a tad bit dark for me, but I think for medium to deeper complexions, this will be a perfect shade. Like, I will let it dry for a quick minute. Until then, I will go in with another round of setting spray with my angled brush. Use the same Wet n Wild palette that I've been using for centuries. I know I need to buy a new one, but when I'm obsessed with one thing, I go back and forth with it. कुछ भी ऐसे लग गया हो आइज पे तो निकल जाएगा, और वाइट वाइट वो जो भी रह जाएगा एक्सीडेंटली वुडंट शो अप. आई डू दी आईब्रोज अगेन बिकॉज कभी कभी जब हम लोग लगा रहे होते हैं कुछ भी प्रोडक्ट्स लाइक पाउडर, अभी मैंने कॉम्पैक्ट लगाया तो फिर व्हाट हैपेंस इज सर्टन अमाउंट ऑफ फॉलो डेफिनेटली हैपेंस ऑन दी आईब्रोज. कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो सेटिंग स्प्रे करने से वो सारा पाउडर मेल्ट हो जाएगा. एंड उसके बाद अब थोड़ा सा आईब्रो का जो भी पोमेड होगा, पाउडर होगा, उसके ऊपर से just run it through and comb it. The white powder that accidentally just falls in, वो नहीं रहेगा, and you'll be good to go. It will look much cleaner and nicer. My lips are dry right now, as in सूख गया lipstick, so I am going in with the Fenty Beauty, again a perfect summery shade for me. This is the Gloss Bomb in the shade Fenty Glow. So this is also my current favorite. That is it. This elevates the entire makeup look in itself. So I have done pretty much my entire makeup. Now let me wear the outfit and show you guys the whole finished look. Alrighty you guys, this is my final look. So this is how my makeup look turned out to be. I hope you guys loved it. This is my makeup almost every function, that's why I don't repeat it. But बहुत टाइम हो गया था and मेरे products भी थोड़े upgrade हो गए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं फिर से film कर लूँगी. My hair is not oily, it is sweaty because बहुत गर्मी है and it's excessively hot for my liking. So no matter how many times I take a bath, two or even once, it's just gonna be this way. Makeup look doesn't look too much or too cakey. So I hope you guys enjoyed it. If you did, please do give it a big thumbs up, like, share and comment, and share it with your friends and family members. I will see you guys in the next one. Till then, you guys take care, stay safe, bye.